सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सपोज मान लेते मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मान लेते मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीन मेजर चीज होती है। क्या क्या? परपेंडिकुलर, एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड पहले समझो उसके बाद लिखो। एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। उसके बाद हो जाता है बेस और उसके बाद हो जाता है हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे सिर्फ इतना जानने से नहीं होता। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा हाइपोटेनियस और कौन सा एल्टीट्यूड। मतलब हम चाहते तो इसको भी तो एल्टीट्यूड लिख सकते थे, बट हम क्यों नहीं लिखे, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे समझो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। हमेशा याद रखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है। सो हाइपोटेनियस हमेशा उसी साइड को बोलेंगे जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट, ठीक है। 90 डिग्री के ऑपोजिट मतलब ये साइड भी नहीं हो सकता, ये साइड भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हाइपोटेनियस। सेकेंड चीज, एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? देखो सेम हम लोग मान लेते हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जनरली ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, ठीक है। वो हम आएंगे बाद में डिस्कस करेंगे। और हमेशा रेशियो में ना एक एंगल को कंसीडर किया, मतलब देखो ट्राइंगल में तीन एंगल होता है। अब जैसा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल लिए है तो एक तो 90 डिग्री चला गया, ठीक है। अब जो बचा ये और ये, सपोज आपको क्वेश्चन में बोलता है कि सपोज आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एंगल सी को कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो जब आप एंगल सी को कंसीडर कर रहे तो देखिए एंगल सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है बोलो? ए। ए नहीं, ए बी, ठीक है। एंगल सी के कौन सा ऑपोजिट साइड है? ए बी। तो जो भी एंगल को आपको कंसीडर करने बोला जाएगा उसका ऑपोजिट साइड जो होगा उसको ही हम लोग एल्टीट्यूड पकड़ेंगे। समझ में आया? तो हम लोग रैंडमली किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं पकड़ सकते। हम लोग को देखना है कौन सा एंगल आपको बोला गया है। जो एंगल बोला गया है उसका जो ऑपोजिट साइड है दैट विल बी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, अंडरस्टूड। और अब जो रिमेनिंग साइड बचा, देखो हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड है, वो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट ही होता है। तो 90 वाला के ऑपोजिट जो है दैट इज हाइपोटेनियस। जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके ऑपोजिट हुआ परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग बच गया दैट इज BC, वो हो गया मेरा बेस। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग को दो साइड का रिलेशन को डिटरमाइन, मतलब यहाँ पे 6 मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉस, टैन, ठीक है, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। अब देखो, सो साइन थीटा इक्वल्स P बाई एच, cos theta equals B by H, tan theta equals P by B, ठीक है, P by B, cosec theta equals H by B, sec theta equals H by B और cot theta equals B by B। एक चीज याद रखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक है। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, अंडरस्टूड। अब थीटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मान लो ये ABC है, ठीक है। अब मेरे को बताओ सबसे पहले कि हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें? 90 के सामने वाला AC हो गया हम लोग का हाइपोटेनियस, ठीक है। आज उसके बाद पर अब देखो मान लो इसको थीटा पकड़ेंगे, ये अगर थीटा है
तो हमको बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा, सो इसका मतलब साइन थीटा, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ए बी है, सो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। इसके अलावा सेम ट्राइंगल में एक अलग एंगल भी दे सकता है, मतलब मान लो ये एंगल भी हम लोग इसके रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। तो मान लो ये एंगल, मान लो ये दिया फाई, इसको फाई बोलेंगे। तो अब आपसे पूछा है कि साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, साइन फाई का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ साइन फाई का वैल्यू क्या होगा। BC by AC। BC बाई AC। क्यों? क्योंकि फाई के ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, राइट। मतलब अगर हम फाई एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस तो अपना फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया BC बाई AC। अंडरस्टूड। तो सपोज मान लेते एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये जो एक ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये एंगल आपको दिया है थीटा, ये एंगल दिया आपको फाई, ठीक है। एंड वो भी ग्रीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पे ये मेरे को दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हम लोग को 3 सेंटीमीटर, और हम लोग से पूछा है फाइंड फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस फाई, ठीक है। निकालो, यहाँ पे एक और लिखो कॉस फाई प्लस साइन फाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, right, which is 25 minus 9, which is 16. AB equals root over 16, which is 4. So AB 4 आ गया। अब हम लोग को साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा हो गया BC बाई AC। कॉस फाई हो गया हम लोग का, कॉस फाई हो गया BC बाई AC। और साइन फाई हो गया हम लोग का AB बाई AC, राइट। तो BC क्या है 3/5 प्लस, फिर से 3/5 प्लस 4/5, which is 10/5, which is 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, एक्सरसाइज 18। If A is an acute angle, sin A equals 3/5। तो देखो साइन A क्या है 3/5, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग यहाँ पे ना आइडेंटिटीज यूज करते हैं, ओके। तो हम लोग तो अभी बहुत सारा आइडेंटिटीज देख चुके हैं। तो देखो सबसे पहले तो व्हाट वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है, राइट। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए is equals to 1 minus 3/5 whole square, which is cos square a equals 1 minus 9/25, cos square a equals 25 minus 9, cos square a equals 16/25, cos a equals 4/5, ठीक है। अब cos a निकल गया है तो sec a भी निकल जाएगा, sec a इक्वल्स 5/4। और जैसा कि sin a दिया है तो cosec a भी निकल जाएगा, cosec a इक्वल्स 5/3। tan a हम लोग निकाल सकते हैं, tan a जो होता है वो sin a बाई cos a होता है, राइट। sin a क्या है 3/5 डिवाइडेड 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 × 5/4, which is 3/4, ठीक है। और tan a निकल गया है तो cot a भी निकल सकता है, which is 1/tan a,
विच इज 4/3. ठीक है. सो क्वेश्चन टू भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसीलिए वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 क्या बोला गया है देखिए. क्वेश्चन 3 में बोला है इफ 12 कोसेक थीटा 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स 30. ठीक है. हम लोग को क्या निकालना है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा. ओके. सो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. तो यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल्स 12/13. और हम लोग कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ठीक है. which is 1 minus 12/13 whole square, which is 1 minus 144/169 and 169 minus 144/169 which is 25/169. So cos theta क्या हो जाएगा, cos theta हो जाएगा 5/13. cos theta निकल गया, sin theta निकल गया, हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं. So this will be 2 times 12/13 minus 3 times 5/13 by 4 times 12/13 minus 9 times 5/13. So ये हो जाएगा मेरा 24 minus 50 by 48 minus 45 which is equals 9/13 by 3/13. 13 goes off, we will get 9/3 which is equals 3. ठीक है. अंडरस्टूड. चलो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग. अच्छा हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करते हैं. सो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दिस इज cos square 26 plus cos 64 sin 26 plus tan 36 by cot 54. ठीक है. सो cos square 26 प्लस ये cos 64 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos 90 minus 26. ठीक है. प्लस ये tan के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 minus 54. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, cos square 26 प्लस sin 26, ये हो जाएगा sin 26 और sin 26 टाइम sin 26 ये हो जाएगा sin square 26 प्लस tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा. ठीक है. cot 54 बाई cot 54. तो ये sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 हो जाएगा और ये cot कट के अल्टीमेटली 1. सो वी हैव आंसर 2. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव sec 70 by cosec 73 plus tan 68 by cot 22 plus cos square 44 plus cos square 46. So this will be sec 90 minus 73 by cosec 73 plus tan 90 minus 22 by cot 22 plus cos square 90 minus 46 प्लस cos square 46. तो ये हो जाएगा cosec 73 बाई cosec 73 प्लस cot 22 बाई cot 22 प्लस sin square 46 प्लस cos square 46.
तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल्स 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so question 5 1, we have sine 65 by cos 25, okay, plus cos 32 by sin 58 minus sin 28 sec 62 plus cosec square 30। तो ये हो जाएगा sin 90 minus 25 by cos 25 plus cos 90 minus 58 by sin 58 minus sin 28 sec 90 minus 28 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू तो मेरा 2 हो जाता है, राइट, 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा cos 25 by cos 25 प्लस sin 58 by sin 58 माइनस sin 28 times cosec 28 plus 4 1 plus 1 minus 1 plus 4, right, which is 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। we have sec 29 by cosec 61 plus 2 cot 8 cot 17 cot 45 cot 73 cot 82 minus 3 sin square 38 प्लस sin स्क्वायर 52। ठीक है, सो एक एक करके चेंज करते हैं। सेक 29 की जगह पे लिखेंगे सेक 90 माइनस 61 बाय कोसेक 61 प्लस, यहाँ पे भी एक एक करके चेंज करते हैं। देखो cot 45 का वैल्यू तो पता है 1, हम लोग इन दोनों को चेंज करते हैं। So this will be 2 cot 8 cot 17 into 1 into cot 90 minus 17 cot 90 minus 8 minus 3। ठीक है, sin स्क्वायर 38 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक 61 बाई कोसेक 61 प्लस 2 cot 8 cot 70 tan 70 tan 8, right, minus 3 sin square 38 प्लस cos square 38। ठीक है, इज 1 प्लस cot 8 tan 8 कट जाएगा 1, cot 17 tan 17 कट जाएगा 1। सो वी हैव 1 प्लस 2 माइनस 3 विच इज 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 1 करते हैं।
So we have sin 35 cos 55 plus cos 55 sin 55 और यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 80। ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया साइन 35 कॉस 90 माइनस 35 प्लस कॉस यहाँ पे हो गया सॉरी, तो हाँ दिस विल बी 35। ठीक है। सो यहाँ पर दिस विल बी cos 35 sin 90 minus 35 by cosec square t minus tan square 90 minus t. So this will be sin 35 plus cos 35 by cosec square t minus cot square t. ठीक है। So this will be sin square 35 plus cos square 35 by cosec square theta minus cot square theta equals 1 होता है। So this will be 1 by 1 which is 1। Okay, चलो next question। So यहाँ पे है sin square 34 plus sin square 56 plus 2 tan 80 tan 72 minus cot square 30। So ये हो गया sin square 35, sorry this will be 34 plus sin square 90 minus 34 plus 2 tan 80 tan 90 minus 18 माइनस देखो cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो ये होल स्क्वायर होगा विच इज sin square 34 plus cos square 34 plus 2 tan 80 cot 80 minus 3 which is 1 plus 2 minus 3 which is 0। ठीक है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 1 देखो क्या बोला। वी हैव tan 25 by cosec 65 whole square plus cot 25 by sec 65 whole square plus 2 tan 80 tan 45 tan 72। ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 90 minus 65 by cosec 65 whole square plus cot 90 minus 65 by sec 65 whole square plus 2 tan 80 tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, 2 tan 80 tan 90 minus 18। ठीक है, which is equal to cot 65
by cosec 65 plus tan 65 by sec 65 plus 2 tan 80 cot 18। तो ये हो जाएगा मेरा cot 65 इंटू साइन 65, क्योंकि कोसेक जो था वो 1/sin, प्लस tan 65 इंटू cos 65। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक जो है वो cos का उल्टा है, प्लस 2। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये cot के जगह पे हम लोग लिखेंगे cos 65 बाई साइन 65 इंटू साइन 65 होल स्क्वायर। tan की जगह पे लिखेंगे साइन 65 बाई cos 65 इंटू cos 65 प्लस 2। तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस 2 विच इज़ 1 प्लस 2 विच इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 का 2 क्या बोला गया है? वी हैव cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो ये हो गया मेरा cos स्क्वायर 90 माइनस 65 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज इक्वल्स साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस ये हो गया 1 विच इज इक्वल्स 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव प्रूफ्स। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो वी हैव प्रूफ्स। देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन 8 का 1। यहाँ पे LHS में क्या दिया हुआ है? सेक a प्लस tan a हो गया 1 माइनस साइन। तो सेक ए के जगह हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, tan ए के जगह लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। राइट, ये हो गया 1 माइनस साइन। सो दिस विल बी कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी बाई कॉस ए विच इज कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए विच इज कॉस ए विच इज इक्वल्स RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये मेरा LHS है। सो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट,
सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए विच इज 1, राइट, विच इज इक्वल्स आर एच एस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9। तो देखो यहाँ पे एलएचएस में क्या बोला है, tan ए प्लस कॉट ए, राइट। सो tan ए के जगह हम लोग लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए के जगह क्या लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए। सो अल्टीमेटली दिस विल बी कॉस ए साइन ए और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, विच इज 1 बाई कॉस ए साइन ए विच इज 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए, ठीक है, विच इज इक्वल्स आर एच एस। सेकेंड नंबर, we have 1 minus cos a, 1 plus sec a equals tan a to sin a, right। so LHS ले लेते हैं, 1 minus cos a, 1 plus sec a, so this will be 1 minus 1 by sec a, 1 plus sec a, which is sec a minus 1 by sec a, और हम लोग इसे sec a plus 1 भी लिख सकते हैं, which is sec square a minus 1 by sec a, ठीक है। sec square a minus 1 क्या होता है tan square a, और ये sec a के जगह हम लोग cos a लिख सकते हैं, so this will be tan a into sin a by cos a to cos a, राइट। जैसे कि 2 tan था तो उसके जगह एक tan के जगह मैं क्या लिख दिया sin a by cos a कट जाएगा, we have tan a into sin a, therefore RHS। okay, next question, we have question 9 का 2, sorry 9 to ये हो चुका है। now we have question 10(1), ये क्या है cos cot square a minus cos square a equals cot square a cos square a, right। सो LHS ले लेते हैं हम लोग, ये क्या है cot square a माइनस cos square a, cot के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, so instead of cot square a we will write cos square a by sin square a, right, माइनस cos square a, so ये हो गया मेरे पास sin square a cos square a माइनस cos square a sin square a, which is cos square a 1 minus sin square a by sin square a, which is cos square a into cos square a by sin square a। तो cos square a by sin square a क्या हो जाएगा cot square a, राइट, इंटू cos square a, ये हो गया मेरा RHS, ठीक है। नेक्स्ट 10 का 2 देखते क्या दिया हुआ है, सो वी हैव LHS 1 plus tan square theta by 1 plus sec theta, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 plus sec theta 1 plus sec theta plus tan square theta, तो ये हो जाएगा sec square theta प्लस sec theta, क्योंकि हम लोग को पता है 1 plus tan square theta sec square theta by 1 plus sec theta, ठीक है।
So we will take sec theta as common. So ये हो गया sec theta plus 1 by 1 plus sec theta. ये दोनों कट जाएगा. We have sec theta. Okay, RHS. ठीक है. Next question. We have tan 3, which is 1 plus sec A by sec E. ये LHS है. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 by cos A, 1 by cos A. ठीक है. So ultimately this will be cos A plus 1 by cos A by 1 by cos A. ये कट गया. We have 1 plus cos A. और RHS को अगर हम लोग देखें, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए. साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस. सो दिस विल बी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए. ये दोनों कट गया. We have 1 plus cos A. Therefore LHS equals RHS. ठीक है. 4 नंबर. We have LHS sin A by 1 minus cos A. Right. अब हम लोग क्या करेंगे? We can rationalize. इसे लिखेंगे sin A 1 plus cos A by 1 minus cos A into 1 plus cos A. So ये हो गया sin A 1 plus cos A by 1 minus cos square A, which is sin A 1 plus cos A by sin square A, which is 1 plus cos A by sin. RHS क्या है? cosec A plus cot A. ये हो गया 1 by sin A plus cos A by sin, which is 1 plus cos A by sin. ठीक है. Therefore LHS equals RHS. Okay. So next question हम लोग देखते हैं question 11. Question 11 में LHS is given sin A by 1 plus cos A. Okay. So इसको rationalize करते हैं. This will be sin A multiplied 1 minus cos A by 1 plus cos A 1 minus cos A, which is sin A multiplied 1 minus cos A by 1 minus cos square A. So this will be sin A 1 minus cos A by sin square A. So this will be sin A 1 minus cos A by sin. ठीक है. That is equals RHS. So, next question. We have question 2. That is LHS is given 1 minus tan square A by cot square A minus 1. Okay. So this will be we can write it as 1 minus
sin squared a by cos squared a by cos squared a by sin squared a minus what, which is equals cos squared a minus sin squared a by cos squared a minus sin squared a by sin squared a। ठीक है, सो ये और ये कट जाएगा, वी हैव sin squared a by cos squared a because it will go reciprocal and this will be equals tan squared। Okay, so therefore it is RHS। Next question, we have 11(3). तो यहाँ पे क्या बोला है, sin a by 1 plus cos a। ठीक है, so we can take the RHS also। We have cosec a minus cot a, which is 1 by sin a minus cos a by sin a, which is 1 minus cos a by sin a, right? So we can rationalize this one। This is sin a 1 minus cos a by 1 plus cos a 1 minus cos a। So we have sin a 1 minus cos a। Okay, so actually we are so this will be 1 minus cos squared a, right, which is 1 minus cos a, sorry, sin a by sin squared a। So this will be 1 minus cos a by sin। Okay, and one more thing what you can do, suppose if you split this one, we have got the RHS, right? But suppose if you don't want to solve this RHS, simply you can just split this will be 1 by sin a minus cos a by sin a, this will be cosec a minus cot a। ठीक, next question, we have fourth, which is 1 minus tan theta by 1 minus cot theta whole square equals tan square theta। Okay, so we will take the LHS। We have 1 minus tan theta by 1 minus cot theta whole square। Okay, we can take it as 1 minus tan theta by 1 minus 1 by tan theta। Okay, and this will be 1 minus tan theta by tan theta minus 1, right, by tan theta। So this tan theta will go up, we have tan theta multiplied 1 minus tan theta by minus 1 plus tan theta। Okay, so if
If I take minus as common, this will be tan theta 1 minus tan theta by minus 1 minus tan theta. Okay, 1 minus tan theta 1 minus tan theta goes in. So we will get tan square theta. Okay, next question, question 12. So question 12 we have sec 12 1. We have sec a minus 1 by sec a plus 1. Right. Simply we can write 1 by cos a plus minus 1 by 1 by cos a plus 1. Okay. So this will be 1 minus cos a by cos a. 1 plus cos a by cos a. Cos a goes up. We have 1 minus cos a by 1 plus cos a. Right. We have got the RHS. Next. So tan square theta by sec theta minus 1 whole square. So, in case of tan theta, we can write sec square theta minus 1, right? And here we have sec theta minus 1 whole square. Now instead of sec square theta minus 1, you can write sec theta plus 1, sec theta minus 1 by sec theta minus 1 whole square. So 1 sec theta minus 1 will get out, right, will be eliminated. So we will have sec theta plus 1 by sec theta minus 1. Now we will write 1 by cos theta plus 1 by 1 by cos theta minus 1. Okay, so we can write it as 1 plus cos theta by cos theta by 1 minus cos theta by cos theta. So we have 1 cos theta cut. We have 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. Okay, understood? So RHS. Next question. Next we have 3. 1 plus tan a whole square plus 1 minus tan a whole square. First we will use identity. 1 plus tan square a plus 2 tan a plus 1 plus tan square a minus 2 tan a. So 2 tan a and minus 2 tan a will be cut, right? So we have 2 plus 2 tan square. So if we take 2 as common, you will get 1 plus tan square. So 1 plus tan square is sec square. So we have 2 sec square, right? Next fourth, we have sec square a plus cosec square a. So sec square a is 1 by okay 1 by cos square a plus 1 by sin square, right? So this will be cos square a sin square a plus cos square a, cross multiply.
So this will be 1 by cos square a sin square a. So 1 by cos square a is what? Sec square a. And 1 by sin square a is what? Cosec square a. So we have got the RHS. Okay. Next question. We have 13. 13 what? 1 plus sin a by cos a plus cos a by 1 plus sin a. So we have cos a 1 plus sin a 1 plus sin a whole square plus cos square. Okay. So we have 1 plus sin square a plus 2 sin a plus cos square by cos a 1 plus sin a. So we have 1 plus, see this sin square a cos square a will become 1 plus 2 sin a. Okay. By cos a 1 plus sin a. So 2 we will take common. We will have 1 plus sin a by cos a 1 plus sin a. Now this 1 plus sin a 1 plus sin a will be cut, and we have 2 uh, we will have 2 sec a, right, because 1 by cos a is sec a. Okay. Next question. We have 2, which is tan a by sec a minus 1 plus tan a by sec a plus 1. So if I take this will be sec squared a minus 1, right, minus 1 plus 1 will be a square minus b square, and then we will cross multiply sec a plus 1 plus tan a sec a minus 1, right. So this will be tan a sec a plus tan a plus tan a sec a minus tan a by this will be tan squared a. So ultimately this will be cut. We have 2 tan a sec a by tan squared a. So we will have 2 sec a by tan a. Now this will be 2 into, instead of sec a I will write cos a, and instead of tan a I will write sin a cos a. Cos a will cut. So 2 by sin a will be 2 cosec a. Okay. Understood? Next question. So we have 14. So 14 one we have cosec a by cosec a minus 1 plus cosec a by cosec a plus 1. So we will take the LCM first. So this will be cosec a, sorry, cosec square a minus 1. This will be cosec a plus 1 plus cosec a minus 1. So this will be cosec squared a plus cosec a plus cosec squared a minus cosec a by cot squared a. So this will be cut, 2 cosec squared a by cot squared a. Instead of cot squared a, what I will write? Sorry.
This will be 2 cosec square a into sine square a by cos square a. So as cosec and sine are reciprocal of each other, we will cut it, and ultimately we will have 2 by cos square a, which is 2 sec square a. Okay, next question. We have 14(2), which is cot a minus tan a. So we will write it as cos a by sin a minus sin a by cos a. So this will be sin a cos a, and cos square a minus sin square a. Okay. Now if I simplify the RHS also, we have 2 cos square a minus 1 by sin a cos a. So instead of 1, I can write sin square a plus cos square a, right? And this will be sin a cos a. Now 2 cos square a minus sin square a minus cos square a. So 2 cos square a minus cos square a will be, it will be cos square a. So we have cos square a minus sin square a by sin a cos a. Okay. Therefore LHS equals RHS. Or we could have simply solved this one. So instead of sin square a, we can write 1 minus cos square a. Okay. So this will be cos square a minus 1 plus cos square a, right? Or it can become 2 cos square a minus 1. Okay. By sin a. Okay. Let us start with next question. We have 14(3), okay, which is cot a minus 1 by 2 minus x square a. So what we can do, we have to write it in the form of cot a by tan a. So this will be cot a minus 1 by 2 minus, instead of sec square a, we can write 1 plus tan square a, right? So this will be cot a minus 1 by 2 minus 1 minus tan square a. So we can write cot a minus 1 by 1 minus tan square a. Okay. Now we can also write it as 1 minus 1 by cot square a, which is cot a minus 1 by cot square a minus 1 by cot square a, which is cot a minus 1 by this cot square a will go up, and we have cot a plus 1 cot a minus 1, right? So this will be cut. We have cot square a we could have changed the numerator also. Okay, let us see. So cot square a by cot a plus 1, right? So cot square a by 1 by tan a plus 1. Okay. Basically it's going again that way. So this will be 1 plus tan a by tan a. This tan a will go up. We have cot square a into tan a by 1 plus tan a. Now this tan and 1 cot will cut. We have cot a by 1 plus tan. Okay. You can try it in other simple way also if you can find. Okay. Now let us move to next question.
we have 1 plus, sorry, 1 by 1 plus sine theta, 1 by 1 minus sine theta. So this will be 1 squared minus sine squared theta, 1 minus sine theta plus 1 plus sine theta, which is 2 by cos square theta, which is 2 sec square theta. Okay. So next question 15, tan square theta minus sine square theta equals, so instead of uh, what we can do is that, so देखते हैं यहाँ पे हम लोग we can write this as sine square theta by cos square theta minus sine square theta. So ये हो जाएगा cos square theta sine square theta minus sine square theta cos square theta, right? So sine square theta 1 minus cos square theta by cos square theta, ठीक है. तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कॉस थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है. सो फर्स्ट तो इस tan थीटा को चेंज करते हैं. दिस विल बी cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा. सो वी हैव cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos theta minus sin theta. So we have cos square theta by cos theta minus sin theta, sin square theta by cos theta minus sin theta. Okay. So cos theta minus sin theta, we have cos square theta minus sin square theta. So cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta by cos theta minus sin theta. This will be cut. We have cos theta plus sin theta. Okay. Next question. We have 16. So this is 1 plus sin theta whole square plus 1 minus sin theta whole square by 2 cos square theta. So we have 1 plus sin square theta plus 2 sin theta plus 1 plus sin square theta minus 2 sin theta by 2 cos square theta. So this will be cut. We have 2 plus 2 sin square theta by 2 cos square theta, which is 2 1 plus sin square theta by 2 cos square theta, right? So ultimately this will be cut and we have 1 plus sin square theta by cos square theta. Now if I solve the RHS, we have sec square theta plus tan square theta, which is 1 by cos square theta plus sin square theta by cos square theta. So this will be
1 plus sine square theta. Okay. Next we have question 17. We have cosec to the power 4 theta minus cosec square theta, right? So we have to write it in the form of cot theta. Okay, so instead of cosec to the power 4 theta, we can write cosec square theta whole square minus cosec square theta. We know that there is an identity called 1 plus cot square theta is cosec square theta. Okay, so instead of cosec square theta, what we will do, we will write 1 plus cot square theta whole square minus 1 plus cot square theta. So we have 1 plus cot to the power 4 theta plus 2 cot square theta minus 1 minus cot square theta. So this 1 and 1 will be cut. We have cot to the power 4 theta minus cot square theta. Okay, next question we have 17(2), that is 2 sec square theta minus sec power 4 theta minus 2 cosec square theta plus cosec to the power 4 theta. Okay, so we have to write it in the form of cot and tan. So what we will do, instead of cosec we will use the identity 1 plus cot square theta, and instead of sec we will use 1 plus tan square theta, right? So we will write it as 2 1 plus tan square theta. Okay, tan square theta minus sec square theta whole square minus 2 1 plus cot square theta plus this is cosec square theta whole square. So we have 2 plus 2 tan square theta minus 1 plus tan square theta whole square minus 2 minus 2 cot square theta plus 1 plus cot square theta whole square. So we have 2 plus 2 tan square theta minus 1 plus tan power 4 theta plus 2 tan square theta minus 2 cot square theta plus 1 plus cot power 4 theta plus 2 cot square theta. Okay, so we have 2 plus 2 tan square theta minus 1 minus tan power 4 theta minus 2 tan square theta minus 2 minus 2 cot square theta plus 1 plus cot to the power 4 theta plus 2 cot square theta. Now we will cut this 2 cot square theta, 2 cot square theta, 2 tan square theta, 2 tan square theta, 2 and 2 will be cut, minus 1 and 1 will be cut. So ultimately what we have left, this is cot to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta. Okay, this and this. Done. Next question. So next question we have 18. We have 1 plus cos theta minus sin square theta by sin theta 1 plus cos theta. Okay, so we have 1 plus cos theta, this is 1 minus cos square theta. Okay, so we have 1 plus cos theta, this will be 1 plus cos theta
1 minus cos theta. Right. So 1 plus cos theta is common. We have 1 minus 1 minus 1 minus cos theta. These two will cut. So we have this will be cos theta by sin theta is cot theta. Okay. Next 18 we have tan cube theta minus 1 by tan theta minus 1. So we have LHS. This is E cube minus B cube. So E minus B A square plus AB plus B square. Right. These two will cut. 1 plus tan square theta is sec square theta. So this will be sec square theta plus tan theta. Okay. Next question. We have 1 plus cosec theta. Sorry, cosec A by cosec A. So we can write 1 plus 1 by sin A by 1 by sin A. So this will be sin A plus 1 by sin A, and sin A will come here, this one, this 2 will cut, we have sin A plus 1, and if we solve it here, the RHS we have cos squared A by 1 minus sin. This will be 1 minus sin squared A by 1 minus sin, which is 1 plus sin A, 1 minus sin A by 1 minus sin, which is 1 plus sin A. Okay, done. Next, number 2, root over 1 minus cos A by 1 plus cos A. So again I will rationalize the denominator. 1 minus cos A whole square by 1 minus cos square. Right. So this will be 1 minus cos A whole square. This will be sin square. So this is 1 minus cos A by sin. Okay. Now RHS, this is sin A by 1 plus cos A, 1 minus cos A, 1 minus cos A. So we have sin A 1 minus cos A by 1 minus cos square. Okay, which is sin A sin square. Okay, next question. We have question 20.
sorry, this will be plus. Okay, so this will be 1 plus sine a whole square by 1 minus sine square. Now we will remove the root. This will be 1 plus sine a by cos a. So this will be 1 by cos a plus sine a by cos a, which is sec a plus tan. Okay. Next, 2, we have 1 minus cos a by 1 plus cos a, which is 1 minus cos a multiplied 1 minus cos a by 1 plus cos a multiplied 1 minus cos a, which is 1 minus cos a whole square by 1 minus cos square, which is root will be removed. We have 1 minus cos a by sine a, which is 1 by sine a minus cos a by sine a, which is cosec a minus 40. Okay, done. Next, 21. So we have root over sec a minus 1 by sec a plus 1 plus root over sec a plus 1 by sec a minus 1. Okay, so we will rationalize. So we have sec a minus 1 whole square by sec squared a minus 1. Okay, plus sec a plus 1 whole square by sec squared a minus 1. So we have sec a plus, sorry, minus 1 by sec squared a minus 1 is tan squared a, so root will be tan a plus sec a plus 1 by tan a. So we have sec a minus 1 plus sec a plus 1 by tan a, minus 1 plus 1 cut, we have 2 sec a by tan a. Okay, instead of tan I will write 2 sec a into cos a by sin a. Sec and cos will cut, we have 2 cosec a. Okay, next question 2. So cos a cot a by 1 minus sin. Instead of cot we can write cos a by sin a, right? So this will be cos square a by sin a 1 minus sin a, which is 1 minus sin square a by sin a 1 minus sin a. Now this will be 1 plus sin a 1 minus sin a by sin a 1 minus sin a. So this will be 1 by 1 plus sin a by sin a. This is 1 by sin a plus 1, which is cosec a plus 1. Okay, next question, we have 22. Now this is 1 plus tan a
by sin A, 1 plus cot A by cos A. So this is sin A cos A. Sorry. Here we will cos A and 1 plus tan plus sin A 1 plus cot A. So we have cos A plus cos A, and cos A will cut and we will have sin A plus sin A plus this will be cos A by sin A cos A. So we have 2 sin A plus 2 cos A, right, by sin A cos A. Now from here I will split. We will have 2 sin A by sin A cos A plus 2 cos A by sin A cos A. So we have 2 by cos A plus 2 by sin A, which is 2 sec A plus 2 cosec A, and ultimately 2 will be common, sec A plus cosec A. Okay, next question. सो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस टैन. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए. सो देखते हैं. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वी कैन राइट दिस इज कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए. ठीक है. So this will be sin A by sin A plus cos A by sin A minus cos A by cos A plus sin A by cos A. So this will be sin square A by sin A plus cos A minus cos square A by sin A plus cos A. ठीक है. क्यों हुआ? क्योंकि ये जो साइन है वो ऊपर चला गया, ये जो कॉस है वो भी ऊपर चला गया. सो दिस विल बी साइन ए प्लस कॉस ए. दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, सो दिस विल बी साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए. ओके, दिस विल बी कट. वी हैव sin A minus cos A. Okay, next question. So we have 22(3). यहाँ पर देखो क्या बोला, sec to the power 4A minus tan to the power 4A. Okay, so देखते हैं. We have to convert it in the form of 1 plus 2 tan square. अब देखो हम लोग को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर होता है, राइट. सो इसके ये सेक 4a के जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस tan 4a. सो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस tan 4a, राइट. सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, माइनस tan पावर 4a. अभी tan 4a कट गया. वी हैव 1 प्लस 2 tan स्क्वायर. ठीक है, RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन 23. यहाँ पे बोला है कोसेक टू द पावर 6a, कोसेक टू द पावर 6a माइनस कॉट टू द पावर 6a.
plus 3 cosec square A cot square A. Okay. So next question, we have 23 2, which is sec to the power 6a minus tan to the power 6a. Okay, so we can write it as sec to the power square a whole cube minus tan square a whole cube, right, which is sec square a minus tan square a sec 4a plus sec square a tan square a, right, plus tan power 4a, okay, which is sec to the power 4a plus sec square a tan square a plus tan to the power 4a. Now instead of sec we will write it in the form of tan. So this is 1 plus tan square a whole square, right. Then we have 1 plus tan square a plus tan to the power 4a. We have 1 plus tan to the power 4a plus 2 tan square a plus tan square a plus tan to the power 4a plus tan to the power 4a, right. So we have total 3 tan to the power 4a. So this will be 1 plus 3 tan square a plus 3 tan to the power 4a. Okay. Next question, we have 24. So next we have question 24 1. We have cot theta plus cosec theta minus 1 by cot theta minus cosec theta plus 1. So what we will do, instead of 1 we will write cosec square theta minus cot square theta, right, because
1 plus cot square theta is what? Cosec square theta by cot theta minus cosec theta plus 1. So we have cot theta plus cosec theta, and instead of cot this one we will write cosec theta plus cot theta, cosec theta minus cot theta, right? So we have cot theta minus cosec theta plus 1. Okay, now we will take cot theta plus cosec theta as common, and we have 1 minus this one, right? 1 minus cosec theta minus cot theta by cot theta minus cosec theta plus 1. So this will be cot theta plus cosec theta 1 minus cosec theta plus cot theta, and in the denominator also we have cot theta minus cosec theta plus 1. So these two will be cut. We have cot theta plus cosec theta. Instead of cot theta we will write cos theta by sin theta, and instead of cosec theta we will write sin theta. So this will be 1 plus cos theta by sin theta. Okay, next question we have 2, that is sin theta by cot theta plus cosec theta, right? That is equals to 2 plus sin theta by cot theta minus cosec theta. Okay, so we will take the LHS. We have sin theta by cot theta plus cosec theta. So instead of cot theta we will write cos theta by sin theta. Instead of cosec theta we will write 1 by sin theta. So this will be sin theta by cos theta plus 1 by sin theta. This will be sin square theta by 1 plus cos theta. Instead of sin square theta we will write 1 minus cos square theta by 1 plus cos theta. Now instead of 1 minus cos square theta we will write 1 plus cos theta, 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. So these two will be cut. We have 1 minus cos theta. Now we will take the RHS. So we have 2 plus sin theta by, instead of cos theta we will write cos theta by sin theta minus 1 by sin theta. So we will write 2 plus sin square theta by cos theta minus 1, or we can also write 2 minus sin square theta by 1 minus cos theta, right? So this will be 2 minus 1 minus cos square theta by we can write 1 minus cos theta. So this will be 2 minus 1 plus cos theta 1 minus cos theta by 1 minus cos theta. So these two will cut. We have 2 minus 1 minus cos theta, which is 1 minus cos theta. Okay, done. Therefore LHS equals RHS. चलो 25 देखते हैं. 25 sin theta plus cos theta sec theta
sec theta minus sec theta plus cosec थीटा सो यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ओके सो दिस विल बी सेक थीटा this will be sin theta plus cos theta 1 by cos theta plus 1 by sin theta which will be sin theta plus cos theta and this will be sin theta plus cos theta right and we have sin theta plus cos theta whole square by sin theta cos theta which will be sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta okay so this will be we know that sin square theta plus cos square theta is 1 so 1 plus 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta now this if I split this one this will be 1 by sin theta cos theta plus 2 sin theta cos theta by sin theta cos theta right so 1 by sin theta cos theta will be sec theta cosec theta and this will be 2 okay which is RHS next question we have question 2 which is cosec a minus sin a this is sec a minus cos a right so we can write one more thing we have sec squared a now instead of cosec a we can write 1 by sin a minus sin a 1 by cos a minus cos a sec squared a so 1 minus sin squared a by sin a 1 minus cos squared a by cos a sec squared a so we have cos squared a by sin a multiplied sin squared a by cos a into sec squared a so this will be cos a into sin a into sec squared a so ultimately cos a and 1 sec a will cut we have sin a into sec a and sec a is 1 by cos a right so this will be tan a okay RHS next we have question 26 we have sin cube a plus cos cube a by sin a plus cos a plus sin cube a minus cos cube a by sin a minus cos a so we can write it as a cube plus b cube formula so this will be a plus b right a square plus ab plus b square by sin a plus cos a plus sin a minus cos a we have there it will be minus okay this will be minus now we have a minus b a square plus ab plus b square by sin a minus cos a so this will be cut sin square theta plus cos square theta is 1 so this will be 1 minus sin a cos a plus 1 plus sin a cos a
So these two will cut and we have 2. Okay, next question. So we have second, this is cosec, sorry, not this one, tan square a by 1 plus tan square a plus cot square a by 1 plus cot square a. So we have tan square a by sec square a plus cot square a by cosec square a. So we have tan square a multiplied cos square a plus cot square a multiplied sin square a. Right. So we have sin square a by cos square a multiplied cos square a plus cos square a by sin square a multiplied sin square a. So this 2 will cut. We have sin square a plus cos square a, which is 1. Okay, next question. 27. 1 by sec a plus tan a minus 1 by cos a. Okay, so we can write it as 1 by cos a plus sin a by cos a. Okay, minus 1 by cos a. So this will be, this cos a will go up to 1 plus sin a minus 1 by cos a. Right. So we have 1 plus, sorry, this will be cos a 1 plus sin a. This will be cos square a minus 1 minus sin a. Right. So what we can do, we can write it as acha, let us solve the RHS. So we have 1 by cos a minus 1 by sec a minus tan a, which is 1 by cos a minus 1 by cos a minus sin a by cos a. So we have 1 by cos a minus cos a will go up by, this will be 1 minus sin a. Right. So we can write cos a 1 minus sin a, so will be 1 minus sin a minus cos squared a. Okay, now in the LHS, this will be 1 minus sin square a minus 1 minus sin a by cos a 1 plus sin a. Right. And in the RHS we have 1 minus sin a minus 1 plus sin square by cos a 1 minus sin a. Okay, so this will be, these two will cut. If I take sin a as common, minus sin a as common, this will be 1 plus sin a by
cos A, 1 minus sin A. Okay. Or if I simply take and here we have, sorry, this is plus. Okay. So these two will cut. We have minus sin A by cos A, which is minus tan. And in the RHS, this 1 and 1 again, it will be cut, right? So if I take minus sin A as common, this will be 1 minus sin A by cos A, which is 1 minus sin A. This will be cut. We have minus tan. Okay. So LHS equals RHS. Now we will move on to next question, which is sin A plus sec A whole square plus cos A plus cosec A whole square. So question 27 2 देख लेते हैं हम लोग. We have sin A plus sec A whole square plus cos A plus cosec A whole square, right? So first we will use the identity.
Okay, now we will solve the RHS. So in the RHS we have 1 plus sec a cosec a whole square. So this will be 1 plus sec square a cosec square a plus 2 sec a cosec a. Okay, hence proved. This will be sin a by cos a plus sin a by sin a by cos a minus sin a. So we can write it as sin a sec a plus sin a by sin a sec a minus sin a. So if I take sin a as common, this is sec a plus 1 by sin a sec a minus 1, which is sec a plus 1 by sec a minus 1, which is RHS. Okay, next we have 28. So sin theta plus cos theta is equals to root 2 sin 90 minus theta. Okay, so we can write it as sin theta plus cos theta equals root 2 cos theta. Okay, so we can write sin theta plus cos theta by cos theta equals root 2, or we can write sin theta by cos theta plus cos theta by cos theta equals root 2. We can write 1 plus, sorry, this will be tan theta plus 1 equals root 2, or we can write that tan theta equals root 2 minus 1, right? So we can write 1 by cot theta is equals root 2 minus 1, and now we can write cot theta is equals 1 by root 2 minus 1. So if I rationalize, this is root 2 plus 1 by root 2 minus 1 into root 2 plus 1. So this is root 2, this will be plus root 2 plus 1 by root 2 whole square minus 1, which is root 2 plus 1 by 1. Okay, next question. We have 29. So this is 7 sine square theta plus 3 cos square theta is equals 4. We have to find the value of theta. Okay, now we can write it as 4 sine square theta plus 3 cos square theta plus, this will be 3 sine square theta plus 3 cos square theta equals 4. We can write 4 sine square theta plus 3 sine square theta plus cos square theta equals 4. Now we can write 4 sine square theta plus 3 equals 4, or we can write 4 sine square theta equals 4 minus 3. Okay, or we can write 4 sine square theta equals 1. Okay, next we can write sine square theta equals 1 by 4. Okay, then sine theta equals root 1 by 4. Okay, and then we have sine theta equals 1 by root 2, or theta equals 45, right? Because for sine, uh, the theta
This value of theta is 45 degree. Okay. Sorry. This will be 1 by 2, and sine theta equals sine 30, theta equals 30. Okay. Next question. Next question we have question 30. So sec theta plus tan theta equals m, sec theta minus tan theta equals n. Okay, so we have to prove that mn equals 1. So what we can do, we can multiply m into n. So this will be sec theta plus tan theta, which is sec theta minus tan theta, which is sec square theta minus tan square theta equals 1. Okay, next we have 31. So x equals a sec theta plus b tan theta, and y equals a tan theta plus b sec theta. So x square equals a sec theta plus b tan theta whole square equals a square sec square theta plus b square tan square theta plus 2a sec theta b tan theta, which is same. Y square is a tan theta plus b sec theta whole square equals a square tan square theta plus b square sec square theta plus 2a tan theta b sec theta. Now, which is x square minus y square a square sec square theta plus b square tan square theta plus 2a sec theta tan b tan theta minus a square tan square theta minus b square sec square theta minus 2a tan theta b sec theta. Now these two will cut. We have a square sec square theta minus tan square theta plus b square tan square theta minus sec square theta. So we have a square minus b square sec square theta minus tan square theta. So we have a square minus b square. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखो क्या बोला, x इक्वल्स h प्लस a cos theta, y इक्वल्स k plus a sin theta. We have to prove that x minus h whole square plus y minus k whole square is equals a square. So first we will take LHS. So LHS we have x minus h whole square plus y minus k whole square. Now instead of h we will instead of x we will write
h plus a cos theta minus h whole square plus, instead of y we will write k plus a sin theta minus k whole square. Now h and h will cut. We have a cos theta whole square plus k and k cut. We have a sin theta whole square. So this will be a square cos square theta plus a square sin square theta. If we take a square as common, we have cos square theta plus sin square theta, which will ultimately give a square. Okay.